have started with ideal solutions. In ideal solutions, AA interactions, BB interactions are exactly equal to the newly formed AB interactions. Because of that, there won't be any effect in the escaping tendency, and it will form an ideal solution, or it will obey a Raoult's law. Raoult's law के हिसाब से total pressure is PA naught XA plus PB naught XB, and उनके लिए हमने examples भी देखा है. उसके बाद we discussed about real solutions. Real solutions में there is positive deviation from Raoult's law and negative deviation from Raoult's law. Positive deviation के लिए सब कुछ positive है. Delta H mixing is greater than 0. Delta V mixing is greater than 0. Delta S mixing, irrespective of the nature of the solution making process is a spontaneous process. Hence, delta S mixing is greater than 0. Okay. Delta H mixing greater than 0 होने के लिए the initial interactions must be stronger when compared to the newly formed interactions, or newly formed interactions must be weaker when compared to the initial interactions, because of which more amount of vapors can be formed. So P total will be greater than PA naught XA plus PB naught XB. क्योंकि इंट्रैक्शंस कम है, सो मॉलिक्यूल्स का एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो गया, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा. ओके, उसके लिए एग्जांपल्स भी देखा हमने. ऑल दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन विद द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शो व्हिच बिहेवियर: पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन. ओके, ठीक है. नेगेटिव डेविएशन के केस में सब कुछ लेस देन 0 है और सब कुछ लेस देन रहेगा. P total is less than PA naught XA plus PB naught XB. Delta H mixing is less than 0. Delta V mixing is less than 0. But delta S mixing जो है it is greater than 0. उसका ग्राफ्स भी हमने प्लॉट किया. उसके बाद we have seen this case is important where we are putting a non-volatile solute. Non-volatile solute is one which cannot form any vapors or its escaping tendency is 0. So non-volatile solute add करने की वजह से भी solution का vapor pressure में फर्क आएगा. The reason being, the non-volatile solute particles which are present on the surface, they are unable to go into vapor phase and they are not allowing the volatile particles to go into the vapor phase. As a result, the vapor pressure will be decreased. So उसी केस में हम ideal solution में जो फॉर्मूला होता है Raoult's law का PA naught XA plus PB naught XB. PB naught we have taken that as 0. So P total is PA naught XA. As mole fraction is less than 1, the P total also will be less than PA naught. इसी को हमने relative lowering of vapor pressure में convert किया. Relative lowering of vapor pressure is PA naught minus P total upon PA naught. PA naught minus P total is the decrease in the vapor pressure or lowering of vapor pressure. Relative indicates with respect to the initial. PA naught minus P total upon PA naught is mole fraction of solute. इसी में हमने exact relation में PA naught minus P total upon PA naught को upon P total को NB upon NA जैसा लिखा. Approximate relation is PA naught minus P total upon PA naught is NB upon NA जैसा लिखा. Okay, you can use either of these two relations. This relation is valid for very dilute solutions. Very dilute solution के केस में P total and PA naught almost same ही होगा. Okay, I hope this is clear. उसके बाद we have started with boiling. What happens in boiling? Whenever you are heating a substance, boiling कब बोलते हैं हम? Whenever you are forming wave bubbles. और जो bubble है, that bubble is nothing but inside the bubble you will be having vapor, and the pressure inside the bubble will be equal to the vapor pressure of the solution. As you are increasing the temperature, the vapor pressure will be increased. As a result, the bubble can rise to the surface. When the atmospheric pressure is equal to the vapor pressure inside the bubble, then the bubble can rise to the surface, and we say that particular condition is condition for boiling. So boiling होने के लिए vapor pressure of the solution must be equal to the external pressure. Boiling can be treated as rapid rate of evaporation, and it happens throughout the liquid. It is a bulk phenomenon. Evaporation जो है, it is a surface phenomenon. So you can have boiling
either by increasing the temperature, because if you increase the temperature according to Clausius-Clapeyron equation, log P2 by P1 equal to delta H upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. If you are increasing the temperature, the vapor pressure will be increased. Vapor pressure increase hote, it will be reaching atmospheric pressure and there will be start of boiling. Okay, ये कर सकते हो. और दूसरा, you can reduce the external pressure. External pressure को ही घटा दिया such that P external equals to pressure of the solution, then also boiling can happen. Clear? हाँ सर. Okay. आज के लेक्चर में बहुत कुछ theoretical concepts पढ़ेंगे which will be highly helpful for advanced के लिए ज्यादा helpful रहेंगे. मेंस के कंटेक्स्ट में, नीट के कंटेक्स्ट में they will be asking what is the condition for boiling. इतना ही. Okay, एक मिनट. या सब लोग को ग्राफ याद है हमने जो प्लॉट किया, which has 2 y axis. ये ग्राफ याद है आपको? Okay. And again I'm considering A to be more volatile when compared to B. So PA naught will be greater than PB naught. हाँ. यहाँ पे PA naught को मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे PB naught को मार्क कर रहा हूँ. Initially I'm taking the solution to be ideal. So this will be the P total. This is the graph of P total. This is the graph of P total with respect to mole fractions in liquid phase, right? यहाँ पे हमने x a equals to 0 माना, x b is equals to 1 हो जाएगा. यहाँ पे x a equal to 1 होगा, x b equals to 0 होगा. And ये जो particular mole fraction है, these are the mole fractions in liquid phase. Okay. If I want to express the same P total, ये P total का value है. If I want to express the same P total with respect to mole fraction in vapor phase, एक बार P total का expression देखते हैं. P total is equals to PA naught XA plus PB naught XB. Can you tell me the expression with respect to fractions in vapor phase? It is YA upon PA naught plus YB upon PB. very good, YB upon PB naught equals to 1 upon P total. And हमें ये भी पता है if PA naught is greater than PB naught, ये relation पता है ना हमको, YA will be greater than XA and YB will be less than XB, right? As you go from left to right, mole fraction of A क्या हो रहा है? 0 से 1 पे जा रहा है. Mole fraction of B क्या हो रहा है? 1 से 0 पे जा रहा है. Okay, so left to right, the mole fraction of A increases and mole fraction of B decreases. If I want to represent the same P total with respect to mole fractions in vapor phase, P total का value तो same होना चाहिए. Okay, but हमें ये पता है YA is greater than XA ना. So वो जो point है, can I say that point will lie towards right?
यहाँ पे कहीं तो रहेगा। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे व्हाट आई एम मार्किंग इज, आई एम मार्किंग द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वाई ए जो है इट इज ग्रेटर देन एक्स ए, इसलिए राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। वाई बी जो है इट इज लेस देन एक्स बी, इसलिए एक्स बी देखो डिक्रीज हुआ, लेफ्ट टू राइट एक्स बी डिक्रीज हो रहे हैं, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिक्रीज हो रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंक्रीज हो रहा है। This is the same value of P total with respect to mole fraction in vapor phase. उसी ग्राफ में मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, समझ में आया? Any doubt? So if you want to represent or if you want to draw the graph, in terms of mole fractions of vapor phase, आपको ऐसा कुछ ग्राफ आता है। This is the graph. This is the liquid curve and this is the vapor curve. मतलब ये लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शंस के बारे में बता रहे, ये वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस के बारे में बता रहे। ओके, सो यहाँ पे जो पी टोटल रहेगा, ये जो पी टोटल है इसके करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या बनेगा, मार के लाइन, दिस विल बी द करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यहाँ पे सपोज इफ आई एम मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ पी टोटल, उसका करस्पॉन्डिंग वेपर्स कितना बनेगा, ये ड्रॉ किया तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वेपर्स दैट विल बी फॉर्म्ड। ओके, इफ आई एम टेकिंग some mole fraction in the liquid phase, corresponding vapor phase mole fraction क्या बनेगा, ये वाला अमाउंट बनेगा। समझ में आया? Okay, everyone please concentrate. Let us see what exactly happens during distillation process. Distillation में चीजों को कैसे separate करते हैं? The basic principle involved in separation of liquids during distillation is difference in their boiling point. Their boiling point will be different because of the difference in their pure vapor pressures. मतलब pure liquids का जो भी vapor pressure उनका रहेगा वो different रहेगा। ये clear है? देखो starting में you are having this particular mole fraction, corresponding vapor phase mole fraction क्या बना, ये बना ना। Suppose मान लेते you are increasing the temperature, if you are increasing the temperature you will be forming vapors, थोड़ा vapors बना है। The vapor phase composition is this. अब क्या करना है, liquefy that amount. If you are liquefying that amount, liquid phase में जो भी mole fraction है उसके corresponding P total ये बनेगा। उनको क्या कर दिया मैंने, फिर से लिक्विड बना दिया। लिक्विड बनने के बाद अभी मोल फ्रैक्शन हो गया, यू नीड टू एक्सप्रेस दैट एज XA एंड XB। नाउ आई एम हीटिंग दैट, जो भी लिक्विड बना दिया ना अभी उसको मैं हीट कर रहा हूँ और उस लिक्विड से भी वेपर्स बनेगा। इसका वेपर कंपोजिशन क्या होगा, हमको राइट वर्ड यहाँ पे जो पी टोटल है अगेन राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ तो ये वाला कंपोजिशन आएगा। ओके, जो भी वेपर्स बना है अगेन लिक्विफाई देम। If you are again liquefying them, now after formation of liquid यहाँ पे बनेगा उनका P total का। समझ में आ रहा है वाला पार्ट? क्या कर रहे हैं हम, वेपर्स बन रहे हैं, उस वेपर्स को लिक्विफाई कर रहे हैं। लिक्विड होने के बाद you need to express them as mole fractions in liquid phase, so उसके corresponding P total change होता जाएगा। corresponding P total change क्यों होता जा रहा है, because उनका mole fractions change होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि mole fraction in vapor phase, in the vapor phase the component which is more volatile will be more, क्योंकि उसका mole fractions बढ़ता जा रहा है ना, YA is greater than XA, उसके बाद फिर से बढ़ेगा, so P total जो भी है वो भी चेंज होता जाएगा।
I hope this is clear. Yes. Okay, so वैसे करते 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 क्या होगा, in the vapor phase you will be obtaining that particular component which is more volatile. देखो वेपर फेज का कर्व देखते जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ता जा रहा है उसमें. ओके, सिमिलरली उल्टा सोचो. जो भी वेपर्स हो गया वो वेपर्स को हटा दो, जो भी वेपर्स हुआ वो वेपर्स को हटा दो, बचा हुआ जो भी लिक्विड रहेगा उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से वो तेजी से बाहर जा रहे हैं, उसकी वजह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सिस्टम इज गेटिंग इंक्रीज्ड. सो लिक्विड में क्या रहेगा, बी का अमाउंट ज्यादा रहता है, फिर से उससे वेपर्स बनाओ, जो भी बच जाता है वो लिक्विड को ले लो, उसमें फिर से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ज्यादा रहेगा. सो एज यू कंटिन्यू दिस प्रोसेस, in the liquid phase you will be obtaining pure B, and in the vapor phase you will be obtaining pure A. थियरेटिकली सोचो, सबसे पहले सब लोग थियरेटिकली समझो उसको. You are starting with A and B, you are heating it, okay, you will be forming vapors. उस पर्टिकुलर वेपर्स में लिक्विड का मोल फ्रैक्शंस और वेपर का मोल फ्रैक्शन कंपेयर किया तो in the vapor phase mole fraction of the component which is more volatile will be increased, right? And which is more less volatile will be decreased. So that particular vapor composition जो भी रहेगा उसको लेके आप लोग लिक्विफाई कर दो अभी. ओके, अभी फिर से उससे वेपर्स बनाना स्टार्ट करो. Again what will happen in the newly formed vapors, the mole fraction of the component which is more volatile will be increased. So ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाओ. दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शंस में ऐसे फ्रैक्शन में सेपरेट करते जा रहे हैं आप लोग. So at the last, in the vapor phase you will be having more and more amount of A, and in the liquid phase you will be left with more and more amount of B, क्योंकि B is less volatile, A is more volatile. ये समझा? हाँ सर. Is this clear? Okay, ठीक है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में ये करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं हम. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जानना है, पता होना चाहिए. If you are taking pure substance, and if you are heating it, pure liquid ले रहे हैं, and if you are heating it, initially उसका temperature बढ़ेगा, then its temperature will remain constant. कब तक? जब तक उसका पूरा वेपर फेज जो है वो पूरा लिक्विड फेज जो है जब तक वो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज बॉइलिंग. ओके, so this is boiling point. उसके बाद if you heat it, the temperature will again change. This is for pure liquid. But if you take a solution, pure liquid boils at constant temperature, but a solution doesn't boil at constant temperature. Solution boils at range of temperatures. मतलब पहले initially solution का temperature increase होगा, then it will boil in range of temperatures. Again उसका लास्ट में वेपर का फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा. ओके, सो दिस इज फॉर solution of A
and B. So boiling जो है, it started at temperature T1 and it ended at temperature T2. Okay, so मैं ये बोल सकता हूँ pure liquid boils at constant temperature. The solution of A and B boils in range of temperatures. Is this clear? हाँ. ऐसा क्यों होता है? आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, आप लोग फिर से बाद में उसके ऊपर सोचो. What is the condition for boiling? What is the condition for boiling? Vapor pressure of Where the vapor pressure equals to the external pressure. atmospheric pressure or external pressure. So यहाँ पे क्या हुआ स्टार्टिंग में, the vapor pressure of the liquid got equal to the atmospheric pressure or the external pressure. But ये solution होने के वजह से whenever you are forming vapors, जो mole fraction liquid phase में है वही mole fraction vapor phase में नहीं रहेगा. वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, जो कम वोलेटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन घट जाएगा. राइट? सो लिक्विड फेज में क्या हो गया, द कंपोनेंट व्हिच इज हैविंग मोर वोलेटिलिटी उसका मोल फ्रैक्शन घटा ना, द कंपोनेंट व्हिच इज हैविंग लेस वोलेटिलिटी उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा. ओके, सो उस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के वजह से जो पी टोटल अभी रहेगा, इट विल बी अ डिफरेंट वैल्यू. इट इज नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर नाउ. अभी इनिशियली हम क्या किया, वो टेम्परेचर बढ़ाते वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है we made that equal to the external pressure, but because of the escape of the components A and B from the solution, the mole fraction of solution got changed. And कैसे बदला, the component which is more volatile उसका मोल फ्रैक्शन घट गया and which is less volatile उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा. right? Now in order to make the vapor pressure of that particular solution equal to the external pressure, फिर से आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. So यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हुआ, फिर से आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा in order to equate that to the vapor pressure of the, in order to equate that to the external pressure. As there is continuous change in the mole fraction in the liquid phase, you are continuously changing the temperature. समझ में आया? I hope this is clear. Okay, नहीं तो आप लोग को बेसिक इतना याद रखो, प्योर लिक्विड जो है इट बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉल्यूशन जो है इट बॉइल्स इन रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. आइडिया इज थिंक ऑन दीज लाइंस, the vapor pressure of the solution must be equal to the atmospheric pressure or the external pressure. So whenever you are converting the solution into vapors, the mole fraction of the liquid phase is constantly changing. If it is constantly changing, और जो P total है PA0XA plus PB0XB, ये भी constantly change होता जाएगा. So इस वैल्यू को एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वेट करने के लिए आपको टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ेगा. आया समझ में? ठीक ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज थियरी. क्वेश्चन कैसे आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चंस तो इजी आएगा आपको. These theoretical questions are usually part of JEE Advanced. मेंस में आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा. At 80 degrees C, PA0 equals to
520 mm of Hg, Pb naught equals to 1000 mm of Hg. If a solution of A and B starts to boil at 80 degrees C and 1 atmosphere, the amount of A in the mixture is, matlab you need to tell me the mole fraction of A. Calculate this. What is the condition for boiling? P external equal to P liquid. P external is equals to pressure of the solution. P external कहाँ पे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे equals to 1 atmosphere. 1 atmosphere. So equate P of pressure of the solution to 1 atmosphere, which is 760 mm of Hg. Pressure of the solution is Pa naught Xa plus Pb naught Xb. So get the mole fraction of A in order to have total pressure as 760 mm of Hg. (520 into Xa plus 1000 into Xb के प्लेस में मैं 1 minus Xa पुट कर सकता हूँ equals to 760. This implies 1000 minus 480 Xa is equals to 760, or Xa equals to 240 upon 480, 1 by 2. So mole fraction of A is equals to 0.5. What is the mole percentage? Mole percentage of A equals to mole fraction of A into 100. खुद का moles divided by total moles into 100, which is 50%. 50%.
Okay. I hope this is clear. Anyone has any doubt? ठीक है. Next, again, ये वाला पार्ट भी आपको थियरेटिकल क्वेश्चंस में ही आएगा. Azeotropes. पहले एजियोट्रोप्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखता हूँ. Once go through that information, उसके बाद let us try to understand. एक मिनट. Azeotropes. Some solutions exhibit large positive or negative deviation from Raoult's law. The vapor composition curves for such solutions have a maxima or minima where the vapor and liquid lines converge at a particular composition and give a constant boiling mixture known as azeotrope. At this composition, when the solution is boiled, there is no change in composition. That is, the vapor has the same composition as that of liquid. मतलब क्या है? We have two different types of azeotropes. One is called minimum boiling point azeotrope. Minimum boiling azeotrope, which is formed because of positive deviation from Raoult's law. Everyone, how will the graph for positive deviation for Raoult's law look like? Again, I am considering PB to be or B to be less volatile when compared to A. PA नॉट होगा या PB नॉट होगा. ग्राफ ऐसा कुछ रहता है ना. पॉजिटिव डिविएशन मतलब P total is greater than PA naught XA plus PB naught XB. Okay, so this is the liquid curve. This is the total pressure expressed in terms of mole fractions in liquid phase. If I plot the graph for P total with respect to mole fractions in vapor phase, हमें ऐसा कुछ आता है ग्राफ. Everyone observe. The graph looks something like this. Okay. और थोड़ा बेटर वे में पुट करता हूँ. 2 मिनट. Give me 2 minutes. एक मिनट. I'm sorry.
ये जो ग्राफ है, this graph is for the total pressure with respect to mole fractions in the liquid phase. This graph is the graph for the total pressure with respect to mole fractions in vapor phase. So ये जो है ये liquid curve है and ये जो है this is vapor curve. Okay. इस पर्टिकुलर ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट है where the mole fraction in liquid phase is exactly equal to the mole fraction in vapor phase, right? यहाँ पे mole fraction in liquid phase जो है वही composition है vapor phase में भी. So if I start with this particular composition and whenever I start to boil it, अभी मैं इसको heat कर रहा हूँ, whenever I am heating it, liquid phase में जो भी mole fraction है vapor phase में भी वही mole fraction आया है ना? Or else I can say the mole fraction in the liquid phase is not changing. If the mole fraction in the liquid phase is not changing, can I say the P total value will always be a constant? If the P total value is a constant and if it is equal to the external pressure, it will start to boil. And at that particular temperature, as P total is not changing, the boiling point will be constant. मतलब ये जो azeotrope है, azeotrope behaves as a pure solution, sorry, pure liquid. Starting में initially हमने क्या किया? Whenever you have solution, the solution usually boils in range of temperatures. But if you take azeotrope, and in this particular case, this is called as minimum boiling point azeotrope. Minimum boiling point इसलिए बोल रहा हूँ, this particular solution is showing me positive deviation. Positive deviation का मतलब क्या है? The newly formed interactions are weaker when compared to the initial interactions. Because of the weaker interactions, more and more amount of vapors can be formed. If more amount of vapors are formed, the vapor pressure is already more. If the vapor pressure is already more, in order to equate that vapor pressure to the atmospheric pressure, मुझे थोड़ा ही temperature बढ़ाना पड़ेगा. So boiling point जो है वो relatively less है. Okay. And this is called as minimum boiling point azeotropic mixture. मतलब इस particular composition का liquid जो भी ले रहा हूँ मैं, solution जो भी ले रहा हूँ, that particular solution will boil at constant temperature. If I take any composition before this, मतलब यहाँ पे ले रहा हूँ एक composition, everyone concentrate. Suppose मैं ये वाला composition से start किया, इस composition से जो भी vapors बनेगा, वो ये होंगे, right? Okay. So उसका corresponding उन vapors को if I liquefy them, then this will be the composition in the liquid phase. उसके बाद फिर से vapors बनाया मैंने, उसके बाद फिर से vapors बनाया, this will be the composition in the vapor phase. उसके बाद उनको फिर से liquefy किया, this will be the composition in the liquid phase. वैसा चलते चलते क्या होगा? Finally, I will be obtaining vapors of the azeotropic mixture. Once I get azeotropic mixture, once I get the composition of the azeotropic mixture, I cannot further separate. Okay, so इसका vapor phase में ending में क्या आएगा? You will be getting the azeotropic mixture. If you are taking the liquid phase, इसका जो भी liquid रह गया था, ये liquid phase में ये composition होगा, so फिर से वो वापस यहाँ पे आएगा. So liquid phase में क्या रहेगा? Liquid phase में you will be left with pure B or the component which is less volatile. In the vapor phase, you are getting azeotropic mixture. Clear? If you are taking any composition to the right of this, यहाँ पे क्या होगा? If you are taking any composition to the right of this, you will be getting
In the vapor phase, again, azeotropic mixture. In the liquid phase, you will be getting pure A. Okay, क्योंकि azeotropic mixture का vapor pressure ज़्यादा है. Solution का vapor pressure is greater when compared to vapor pressure of pure A. जिनका vapor pressure ज़्यादा होता है, that will be obtained in the vapor state. The component which is having lesser vapor pressure will be obtained in the liquid state. So any composition of the solution which is taken in this region, and if you are trying to do the fractional distillation, at the end you will be having pure B in the liquid phase, and in the vapor phase you will be having a azeotropic mixture composition. If you are taking any composition in this region, at the end you will be having pure A in the liquid phase and azeotropic mixture in the vapor phase. Once you have azeotropic mixture, you cannot separate it, because azeotropic mixture will boil at constant temperature just like pure liquid. So azeotropic mixture में हम जो भी वेपर्स बनाएंगे उसका कंपोजिशन जो लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन सेम ही है. सो वेपर्स बनने के बाद उसको आप लोग लिक्विफाई कर रहे हैं, फिर से वेपर्स बनाओ उसी कंपोजिशन का बनता जाएगा. You are unable to increase the mole fraction of A or mole fraction of B in the vapor phase. समझ में आ रहे हैं? हाँ. So theoretical question में हमको आता क्या है? When can we form a minimum boiling point azeotropic mixture? We can form a minimum boiling point azeotropic mixture by mixing two liquids which show positive deviation. Okay? हाँ. I hope this is clear. हाँ. As an example, if I'm mixing C2H5OH, this concept is exclusively for JEE Advanced. अगर आपको थोड़ा confusion है तो don't worry. मेंस के बाद इसके ऊपर फिर से हम डिस्कस करेंगे. C2H5OH का 78.4 डिग्री C है, H2O का 100 डिग्री C है. If you are mixing 4% weight by weight H2O in ethanol, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ना, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए. ओके, सो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन boils at 78 degrees C. Okay. Similarly, और क्या हो सकता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया. बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा? इफ यू आर हैविंग ए नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन. नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन मतलब जो वेपर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे उससे कम आएगा. वेपर्स कम आ रहे मतलब in order to increase the amount of vapors or in order to increase the vapor pressure, what you need to do? You need to increase more and more temperature. Hence it is maximum boiling azeotropic mixture. Negative deviation from Raoult's law. Example, if you take 80% weight by weight solution of H2O in HCl, as a solution है, it boils at 108.6 degrees C. वाटर का 100 डिग्री C है, उससे बढ़ गया. देखो, समझ में आया? एंड उनके लिए अगर आप लोग को ग्राफ कैसे दिखेगा करके क्वेश्चन आया.
PB naught, PA naught, this is for the liquid phase and इसके वेपर फेज के लिए ऐसा कुछ आता है. Okay, this is vapor phase. So this is the composition of the azeotropic mixture. यहाँ पे x will be equal to y. अब ये बताओ, if I take any composition in this region, if I try to do fractional distillation, which component will be obtained in vapor phase and which particular component will be obtained in liquid phase? ये vapor curve है, ये liquid curve है. The one which is more volatile will be obtained in vapor phase. The one which is less volatile will be obtained in liquid phase. अभी इसमें नेगेटिव डिविएशन है ना, सो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो लेस वोलेटाइल जैसा हुआ. सो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता गया तो इस पर्टिकुलर रीजन में, इस रीजन में प्योर B is obtained in vapor phase क्योंकि वो ज्यादा volatile है. Azeotropic mixture is obtained in liquid phase. समझा? इस पर्टिकुलर रीजन में किया तो इस रीजन में pure A is more volatile. Pure A is obtained in vapor phase azeotropic mixture is obtained in liquid phase. Clear? इनमें क्या होगा, यहाँ पे azeotropic mixture is ज्यादा volatile. Okay, so pure B is obtained in liquid phase and azeotropic mixture is obtained in vapor phase. Is this clear? Once you obtain azeotropic mixture, you cannot separate it. Okay, I hope this is clear to everyone. Let's go to the next concept. Solubility of gases in liquids. And it is given by a law called Henry's law. JEE मेंस में और नीट में Henry's law से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है. Solubility of gases in liquids given by Henry's law. If I'm having a gas, if I'm dissolving that in some solvent, finally the gas will be present inside the solvent in dissolved state. Okay, so gas in solvent करके मार्क कर रहा हूँ. इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए व्हाट कैन यू कमेंट ऑन डेल्टा H? Exothermic, because initially gas molecules are moving with very high speeds. Whenever they got dissolved inside water, उनका movement restricted हो गया, so the energy got decreased
the decreased energy will be released. So delta H for this reaction is negative, or I can say less than 0. So for such reaction, if I want to make the reaction to go in the forward direction, if I want to dissolve more and more gas in the solvent, what should be the condition on temperature? Decreasing. I need to decrease the temperature, because an increase in temperature will favor endothermic side of reaction. अगर forward direction exothermic है तो backward direction endothermic होगा. So if I'm increasing the temperature, backward direction is favored. So in order to favor forward direction, I need to decrease the temperature. If you want to dissolve more and more carbon dioxide in water, you need to store that particular carbonated water at lower temperature. Okay. So temperature को कम रखना पड़ेगा. With respect to pressure, if I increase pressure according to Le Chatelier's principles, the equilibrium will be shifted in that particular direction where the number of gaseous moles are decreased, right? हाँ. So gaseous moles left hand side में ज़्यादा है, right hand side में वो कम हो गया क्योंकि dissolve हो गया. So on increasing pressure, the equilibrium is shifted in the forward direction. Okay. So in order to have more and more gas dissolved in solvent, what are the conditions? The temperature has to be low and the pressure has to be high. ये clear है? हाँ. Okay. Okay. Good. On increasing pressure, equilibrium shifts in the direction of lesser number of gas moles on decreasing temperature. Equilibrium shifts in exothermic direction. Okay. So Henry's law क्या कहता है? At constant temperature. Okay. At constant temperature, we are having some certain temperature. It can be low, it can be high, whatever. At a constant temperature, the mass of the dissolved gas in a given volume of solvent is directly proportional to the pressure of the gas. उसका partial pressure, वो जो particular gas का partial pressure जितना ज़्यादा रहेगा, because I'm making temperature constant. So more is the pressure of the gas, more will be the amount of gas that will be dissolved. यही है Henry's law, और कुछ नहीं. At constant temperature, the mass of dissolved gas in a given volume of solvent is proportional to the pressure of gas with which it is in equilibrium. Is the statement clear? हाँ. Okay. So law के हिसाब से I can write mass of gas
directly proportional to pressure of gas, or M is directly proportional to P, or M equals to some constant K times P. Okay. We will try to write this particular law in terms of mole fraction, क्योंकि हमने Raoult's law में we have written in terms of mole fraction. PA is equals to PA not XA करके कुछ लिखा है ना. Similarly, we will also try to write this law in terms of mole fraction for very dilute solution or for dilute solutions. ऐसा कुछ सोचो, इनिशियली हमने मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P लिख रहे और P is proportional to M भी लिख सकते हो, ठीक है. If I'm dividing this by molecular weight of the gas, what can I write? The moles that got dissolved is directly proportional to, ये molecular weight एक constant ही है ना, pressure लिख सकता हूँ. हाँ. Okay, if I divide it by ये moles of gas हो गया, right? Moles of gas is directly proportional to the partial pressure of the gas. If I divide it by total moles, N gas divided by moles of gas plus moles of solvent. For dilute solutions, can I take moles of gas plus moles of solvent almost equal to moles of solvent, which is equals to constant? हाँ. क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखा, mass of the gas dissolved in a given volume of solvent. Given volume मतलब I am taking the moles of solvent as constant. Okay, so moles of solvent is equals to moles of solvent लिखा, which is equals to constant. Can I say this will be proportional to pressure of the gas upon, इसको भी उसी constant के साथ divide कर रहा हूँ. कुछ change होगा? Change तो नहीं रहेगा ना? So this is nothing but mole fraction is proportional to partial pressure of that particular gas, or I can write pressure, the partial pressure of the gas equals to some constant, वो जो constant है उसको Henry constant बोलेंगे, into mole fraction. What is this mole fraction? This is the mole fraction that is dissolved in the solvent. Mole fraction of gas in solvent. Is this clear? Yes. So Henry's law क्या है? Henry's law is nothing but pressure of the gas is equals to Kh into X. What is Raoult's law? Pressure because of any component equals to Pa naught into उसका mole fraction in liquid phase. This is also mole fraction inside the liquid. This is also mole fraction inside the liquid. ये दोनों को मैं compare कर रहा हूँ. एक जैसा दिख रहे हैं ना दोनों. Okay, एक बार इन दोनों को compare करके अगर P naught ज्यादा है तो उसका volatility क्या होता है? ज्यादा होता है. उसका volatility ज्यादा मतलब क्या है? वो gaseous phase में ज्यादा रहेगा. It will try to convert more and more into vapors. Similarly, KH ज्यादा है तो क्या होगा? Dissociate ज़्यादा. Sorry, इन दोनों को कंपेयर करो. P naught ज्यादा है तो it is more volatile. Similarly, KH ज्यादा है तो क्या होगा?
the more and more amount of substance will be present in gaseous phase, or else I can say its solubility in liquid phase is less, or its solubility in the solvent is less. Can I say that? इन दोनों के बीच में कुछ पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं. क्लियर है क्या? Okay, sir. थोड़ा सोचो, फिर से सोचो, डिस्कस करता हूं उसके बारे में. दिस इज Henry's law and this is Raoult's law. I am taking two gases, A and B, and I am taking the solvent as same solvent and at same temperature. Okay, and I'm maintaining the partial pressure of A and the partial pressure of B as same. Okay, in that case, can I write KH of A into mole fraction of A will be equal to KH of B into mole fraction of B? If KHA is greater than KHB, what can I comment? XA is less than XB. The moles that got dissolved will be lesser when compared to the moles of B that got dissolved. ऐसा ही पैरेलल में ऐसा कुछ सोच सकते हैं ना, अगर P नॉट वैल्यू ज्यादा है तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका वेपर फेज में मोल्स ज्यादा रहेगा, लिक्विड फेज में मोल्स कम होगा. ओके, और एल्स XA लेस देन XB का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ A is less than B. Or else final result, as a result I can write, याद रखना आप लोग, greater the value of KH, lesser is the solubility of gas. मतलब जितना ज्यादा P नॉट रहेगा उसका अमाउंट लिक्विड फेज में उतना कम होगा. So let us try to correlate this with P naught. Correlate with P naught. I can say higher is P naught, more is the volatility, and less is the mole fraction of the component in liquid phase. Is this clear? Okay. So अभी हमने पहले we used to apply the Raoult's law for the ideal solution. Ideal solution case में PA is equals to PA naught XA करके लिखते थे. But if it is a real solution, we were unable to write PA as PA naught XA or PB as PB naught XB. So real solutions के case में हम क्या करेंगे? Rather than applying the Raoult's law, we will apply Henry's law. So real solutions के case में for one of the component we will apply Henry's law and for the other component we will apply Raoult's law. मतलब क्या है? सब लोग सोचो. I am having solution of A and B. I am having solution of A and B. One of the
component is highly volatile and the other component is less volatile. The one which is highly volatile will have greater tendency to convert into vapors. और उसका जो amount liquid phase में रहेगा, it will be very less. Okay, if its amount is less, or I am considering very dilute solution. मतलब B जो है system में बहुत ज़्यादा है when compared to A. The amount of B is very large when compared to A. So I can consider for B, we have only BB interactions. AB interactions रहेगा system के अंदर, but they will be negligible when compared to BB interactions. Can I say that? I am dissolving very large amount or a very small amount of A in B. So AB interactions banega, but in comparison to BB interactions, AB interactions are very less. So for B, I will be applying Raoult's law. Okay. For A, I can consider there will be only AB interactions. A interactions जो है वो negligible है. So for A, I will be applying Henry's law. So A के लिए क्या लिखेंगे? PA, KHA into XA लिखेंगे. PB के लिए क्या लिखेंगे? PB not into XB लिखेंगे. And that's how we will be calculating total pressure in case of real solution. समझ में आया? लिखता हूँ. Don't worry. Raoult's law is applicable under ideal conditions whereas Henry's law is applicable under real or non-ideal conditions. And ये Henry's law apply करने के लिए भी there is one more condition. The solubility of the gas must be low, or one of the component must be highly volatile when compared to the other component, or you need to have very dilute solution of one component in another component. Okay, तभी हम ये law apply कर सकते हैं. pH is equals to KH into X. ये apply करने के लिए for the component which is present in very less amount, we will be considering only AB interactions. For the component which is present in high amount, we will be considering only BB interactions. जिनके लिए केवल AB interactions है, उसके लिए Henry's law apply करेंगे. जिनके लिए केवल BB interactions है, उनके लिए हम Raoult's law apply करेंगे. समझा? Sir. Sir. Yeah, tell me. वो अगर A मतलब कम soluble है तो फिर उसका वो AA का strength ज़्यादा होगा इसलिए वो break नहीं हो रहा, नहीं soluble हो रहा ना. ये देखो कम soluble है मतलब AA interaction ज़्यादा क्यों होगा? Already वो gas है. I am not considering the bond among in A. I am considering the interactions among AA molecules. कम soluble मतलब उनके initially उनके बीच में भी interactions कम ही है. वो gases है ना. More volatile का मतलब भी वही है. उनके बीच में interactions कम है. तभी तो more volatile हो सकता है. Okay. So ये कब apply कर सकते हैं? Henry's law. It is applicable for liquid in liquid के लिए भी हम apply कर सकते हैं. Liquid in liquid solutions. Where one of the components
is highly volatile and solution is very dilute. Or you can apply for gas in liquid. Gas in liquid solutions. अगर solubility ज्यादा है तो क्या होगा? Apart from AB interactions, you will also need to consider AA interaction, क्योंकि ज्यादा amount dissolve होगा ना उसमें. So you cannot neglect AA interactions. AA interactions भी रहेगा, AB interactions भी रहेगा. Okay. और इस important point है, Henry's law is not applicable for gases that are easily liquefiable. Easily liquefy हो रहे तो उसका solubility ज्यादा रहेगा. Solubility ज्यादा का मतलब क्या है? Liquefiable का मतलब क्या है? It has tendency to convert more and more into liquid. मतलब molecules को पास में रहने का tendency ज्यादा है. Whenever you are dissolving the gas in liquid, the molecules will be close to each other. Okay. So if it is easily liquefiable, more and more gas can be dissolved. If more and more gas is dissolved, I cannot neglect AA interactions in presence of AB interactions. So if you want to calculate the total pressure in case of real solution, you can do that if and only if the solution is very dilute, or the presence of one component must be very less when compared to the another component. For the component which is in greater amount, we will be applying Raoult's law, and for the component which is in lesser amount, we will be applying Henry's law. इसके बारे में और डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. I will again revise this concept. Please go through this and try to draw parallels between Henry's law and Raoult's law. Okay. हाँ. आपको टेक होम मैसेजेस तो ये है, ये वाला पार्ट डायरेक्ट आपको मेंस में क्वेश्चन आएगा, वो वाला और इसके ऊपर. Okay, thank you.